Good morning everyone. I am a student of Law College Dehradun, Uttarakhand University. As we all know that 21st June is observed as the International Yoga Day, so here I am with certain yogic postures. The asana to be performed is the Vajrasana and it is also known as Virasana. It helps in maintaining the digestion system and it also helps in maintaining all our 72,000 veins. So let's start the Vajrasana. For Vajrasana, first we need to have a knee down position like this. The palms are needed to be on the thighs. We need to have a constant and regular breathing. We can do it for 2 minutes, 5 minutes or 10 minutes as per the capacity. So, coming to the pranayam. The pranayam to be performed is the Bhramari pranayam. It helps in reducing hypertension. It makes us stress-free. It is good for self-discipline, self-healing and self-realization. So, starting with the Bhramari pranayam, you need to keep your index finger on the forehead, rest of the fingers on your eyes and your thumbs inside your ear, like this. Now you are required to take a deep breath and while exhaling it, you need to make a humming sound like this. Now slowly come back to the original position. Slowly open your eyes. So this was the Bhramari pranayam. Coming to the mudra. The mudra to be performed is the Namaskar mudra. It is a greeting gesture and it is a palms together position in a gesture of prayer. So to perform the Namaskar mudra, we need an erect position such as Vajrasana. So let's be on Vajrasana. We need to keep our palms together towards our chest. The elbows need to be erect. This is the Namaskar mudra. On this auspicious yoga day, I will perform 3 yoga. First is Kriya. Om This Kriya helps to keep the mind fresh and keep the patience in my life. Second yoga is Vajrasana. This Vajrasana helps my digestion part helpful and fine. Third yoga is Pranayam. This pranayam helps my breathing system. Thank you. नमस्ते, मैं लॉ कॉलेज देहरादून उत्तरांचल यूनिवर्सिटी की छात्रा माई योगा माई लाइफ मोमेंट पे इंटरनेशनल योग दिवस पे आपको कुछ योग करके बताऊंगी। योग को अपने जीवन में जरूर अपनाएं। योग का मतलब होता है एडिशन यानी कि जोड़ना। इसका संबंध भगवान आदि योगी शिव से है।
प्राणायाम में वैसे कई प्रकार के योग आते हैं, लेकिन इसमें हम बात करते हैं भस्त्रिका की। इसमें हमें श्वास को तेजी से अंदर लेके तेजी से छोड़ना है। मैं आपको करके बताती हूँ। भस्त्रिका हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करती है। ये आपको 30 बार करनी है, फिर आप इसको आगे बढ़ा सकते हैं। सेकंड नंबर कपालभाति। ये आपको लगभग 2 मिनट तक करना है, फिर आप इसको आगे इसका टाइम बढ़ा सकते हैं। तीसरी भ्रामरी। इसमें हमें अपनी उंगलियों का और अपने अंगूठे का प्रयोग करके ओम का वर्णन करना है। मुद्रा योग। पहली ज्ञान मुद्रा। इसमें आपको अपने हाथ का अंगूठा और उंगली को दबाना है और तीनों उंगलियां स्ट्रेट सीधी रखनी है और ध्यान करना है। ध्यान मुद्रा से आपका तनाव कम होता है और आपकी बुद्धि में विकास होता है। दूसरी आकाश मुद्रा। इसमें आपको अपना अंगूठा और अपनी बीच की उंगली को दबाना है और बाकी उंगलियां एकदम सीधी रखनी है। आकाश मुद्रा से कान में होने वाली सभी बीमारियां जैसे बहरापन इत्यादि सभी दूर होते हैं, तो हड्डियों की कमजोरी और हृदय की कमजोरियां भी दूर होती हैं। वज्रासना आपके जॉइंट्स को मजबूत करता है और आपके शरीर को फ्लेक्सिबल करता है। तो इस आसन के लिए आप अपने पैर धीरे धीरे सामने खोलें। एक एक पैर आप पीछे ले जाएं और अपने हाथों को घुटने पे रखें। वृक्षासन में अपने राइट लेग को लेफ्ट लेग की थाई पे बिल्कुल ऐसे रखें, दोनों हाथ ऐसे। धीरे धीरे पोजीशन चेंज करते हुए हाथों की। Let's start with the first one, that is Kriya Yoga. Kriya Yoga is a simple physio and psychological method by which our human body is decarbonized and recharged with the oxygen. First of all, sit in a Sukhasana position. Make sure that your back bone should be split. Now, put your hands in this way. Now, slowly start exhaling and inhale. First, exhale. Then inhale, exhale, inhale. Do it for 5 to 10 minutes. It will surely reduce your blood pressure, it cures depression and increase your self-confidence. Okay, so next is pranayama. Pranayama is the practice of breath control in yoga. Now sit in a Sukhasana position. Using the thumb of your right hand, block the right nostril and inhale through your left nostril. Now seal your left nostril with the ring finger of the same hand. Keep your right nostril closed and hold the breath for a moment. Now do as same from your ring finger. Be sure to inhale into your belly, not your chest. Do it 5 to 10 minutes. It surely improves the sleeping quality, reduces high blood pressure. The third and the last one is Bandha and Mudra. There are 9 types of mudras. First Prana, second Mudra, that is flying lotus, third Shunya, fourth Gyan, fifth Vayu, sixth Apan, seventh Surya, eighth Mudra, Shield of Sambhala, ninth is Prithvi. First is Prana. Put your finger in this way. This is Prana. Second is Flying Lotus. Put your fingers in this way. Third is Shunya. Put your fingers in this way. That is the sign of Shunya. Now third is Gyan. Fourth is Vayu. This is the symbol of fire.
Now, fifth is Apan. This is the symbol of Apan.